कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। भारत के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो हम कार्यक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित कर रहे हैं, उसी की श्रृंखला में आज का कार्यक्रम है। 42वीं श्रृंखला है। विश्वविद्यालय की परिपाटी के अनुसार हम अपने आज 43 है, 43वीं है आज। जी सर, 43 ही बोला मैंने। हाँ, 43rd है, 43वीं है। और विश्वविद्यालय की परिपाटी के अनुसार हम अपने सभी कार्यक्रमों का आरंभ विश्वविद्यालय के कुलगीत से ही करते हैं। संजय जी से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के कुलगीत द्वारा कार्यक्रम आरंभ करें। यह जन जन का विश्वविद्यालय, यह जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, वरदान, अभिमान है। सर्व सुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महाल। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित, ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित, सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सारा देश और देश के बाहर के भी भारतीय भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी श्रृंखला में स्वाधीनता संग्राम तथा प्रवासन अध्ययन केंद्र इग्नू ने यह निश्चय किया कि हम 75 व्याख्यानों की श्रृंखला आयोजित करेंगे। उस 75 व्याख्यानों की श्रृंखला में आज हम 43वीं यानी 43rd कड़ी पर खड़े हैं। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रोफेसर सलील मिश्रा जी उपस्थित हैं, जो उर्दू कविता और भारतीय राष्ट्रवाद, उर्दू पोएट्री एंड इंडियन नेशनलिज्म विषय पर अपनी बात रखेंगे। सर, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन और जिनकी प्रेरणा से हम सबको यह शक्ति और साहस मिलता है कि हम इस कार्यक्रम को लगातार आयोजित कर पाए। हमारे बीच आज विश्वविद्यालय के माननीय समकुलपति तथा स्वाधीनता संग्राम एवं प्रवासी अध्ययन केंद्र के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी भी उपस्थित हैं। सर, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं। आपके ही कुशल निर्देशन में और आपके श्रमसाध्य परिश्रम के कारण हम लगातार हर हफ्ते एक नए व्यक्ति के साथ, एक नए वक्तव्य के साथ आप सबके सामने उपस्थित होते हैं। और केंद्र से आगे भी कई इस तरह की योजनाएं हैं जो आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम सर ने बनाई हैं, वो आगे भी हम लोग करेंगे। मैं अपने विश्वविद्यालय के सभी माननीय समकुलपतियों को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों
को भी धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आज जो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे क्षेत्रीय केंद्रों के निदेशक, विभिन्न विद्यापीठों के निदेशक और अन्य बहुत सारे जो लोग आज उपस्थित हैं, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज वह हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आदरणीय प्रोफेसर सलील मिश्रा जी उर्दू कविता और भारतीय राष्ट्रवाद विषय पर अपनी बात हम सबके सामने रखेंगे। साहित्य और राष्ट्रवाद का बहुत जीता जागता संबंध रहा है और हर भाषा के साहित्यकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यह एक बहुत हर्ष का विषय है कि आज इसी विषय पर और खासकर उर्दू कविता को ध्यान में रखते हुए हम सबको आदरणीय प्रोफेसर सलील मिश्र जी की तरफ से उद्बोधन प्राप्त होगा। आदरणीय प्रोफेसर सलील मिश्र जी को आमंत्रित करने से पहले मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रोफेसर सलील मिश्रा acquired his master degree in modern Indian history from the Center for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, from where he went on to do a PhD on communal politics in UP 1937 to 39 under the supervision of Professor Bipin Chandra. His publication includes a monograph on a narrative of communal politics, Uttar Pradesh 1937 to 39, and a small booklet in Hindi on Swaraj Party brought out by the National Book Trust. The booklet was a part of NBT's mission to popularize the Indian national movement among the rural audiences through a series of small booklets written in Indian languages. He has also published articles on themes related to communal politics, language questions, Hindi and Urdu, partition of India, social science, teaching, and identity politics. He has been invited by the UP History Congress, Punjab History Congress, and the Andhra Pradesh History Congress as the sectional president for their sessions. He was the general president of the UP History Congress for the year 2019. He has been nominated as the president of the Modern India section of the forthcoming Indian History Congress. Salil Mishra taught history at Jamia Millia Islamia, New Delhi from 1984 till 1987. During 1988 to 2010, he was a faculty member at the Indira Gandhi National Open University, New Delhi. Salil Mishra was involved in the collection of documents for the research project Towards Freedom for the year 1942, sponsored by the Indian Council of Historical Research. As a member of the editorial team, along with Professor Bipin Chandra and Dr. Vijay Lakshmi Menon, led by Professor Bipin Chandra. The volume has recently been published. During April-July 2009, he was a visiting researcher at the Center for History of Emotions, Max Planck Institute for Human Development, Berlin. Currently, he is a professor of history at the Ambedkar University, Delhi. तो ये सर का एक संक्षिप्त परिचय था। अब मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आदरणीय प्रोफेसर सलील मिश्र जी को आज के प्रमुख वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। Professor, esteemed Professor Satyakam, Dr. Sushil Tiwari, let me express my gratitude to Indira Gandhi National Open University for giving me this opportunity, and other officers of the university, my colleagues. IGNOU is my university. I have never quite, I left in 2010, but have never quite broken away from it. And I still look upon myself as a part of IGNOU. So I'm speaking to my own community. When I was discussing with Professor Satyakam, he suggested that I should prepare my talk in English because there are a large number of non-Hindi speakers, and therefore I will be speaking in English, and I would seek your indulgence to take about 40 minutes in making my point. So please bear with it. Thank you so much. Today's my talk is actually, one clarification is that it is not meant for the experts of Urdu, for the knowledgeable people of Urdu. It is actually a view of Urdu from outside. So it's an attempt to look at Urdu from outside, as it were. There are two elements in my talk: Urdu poetry and Indian nationalism.
Out of the two, I will not speak much on Indian nationalism or patriotism or the relationship between the two. I will spend some time discussing Urdu, and I will in a way try and introduce Urdu to you. I'm assuming, it's my assumption, could be completely wrong, but my assumption is that you are ignorant about Urdu, but also curious. So ignorance and curiosity, this combination of the two, is an ingredient that really suits me for my talk. I'm assuming both of them. I'm assuming you're ignorant, not very well familiar, and I'm assuming you are also curious. I basically have a story in my 40 minutes, and my story is in the form of a riddle, a paheli. The riddle is as follows. I am saying that Urdu literature, Urdu poetry was an extremely unlikely candidate, unlikely literature, unlikely tradition for generating patriotic poetry, for generating nationalist poetry. But it did. It generated plenty of it, plenty of patriotic and nationalist poetry. So how did it happen? There is a question which I will answer. This is a riddle. This is the paheli. I want to present Urdu to you as a very atypical, a very unusual, and sociologically interesting literary tradition. It is not a very usual tradition. It is very, very unique and distinctive. Those people who are brought up in Urdu, a lot of the people in North India and in South, in Deccan, those who are brought up in Urdu, they take its distinctive features so much for granted that they tend not to notice it. And those who are outside Urdu, they have a somewhat stereotypical notion about Urdu. You know, the fact that it was a Muslim language, or the fact that it was a feudal language, or the fact that it was a language, it was a combination of the two. In between these too much of familiarity and this outside notion, some of the idiosyncrasies, some of the very distinctive features of Urdu tend not to get noticed. And it is that which I want to highlight before you. So I have a story to offer. I have a story to present on Urdu, and my story is as follows. I will give you a story, then I will tell you what is distinctive about Urdu, and then I will take up the third part on nationalist and patriotic poetry. The story is as follows. During medieval times, particularly under the Mughals, Persian came to acquire a literary and administrative prestige in India under the Mughals. In Iran, neighboring country, the homeland of Persian, poets and men of letter began to be persecuted under the regime there, under the Safavids, Safavi dynasty. Many of these poets and men of letters, men of literature, they ran away and they migrated to India. India at that point in time had the image of being a Darul Aman, a land of peace, a land which would easily invite people, which would accommodate people. So a lot of the people who felt persecuted in Iran, they immediately came to India and they received a patronage. It was in this process that Persian actually came to be established as a language of literature and prestige. It has a certain prestige. Even today, there are stories, and there are many stories which tell you about the prestige which Persian with Farsi had. So Persian was established in India as the language of prestige. But it was, after all, an alien language. It was an alien tradition. It was something like French in Russia. The elite spoke it, but otherwise it was an alien language. Around the 18th century, a new poetry developed, particularly in the north, mainly in Delhi, which at one level, this particular poetry, it was a complete replication of Persian, of Farsi in all its forms. The ghazal, qasida, panegyric poetry in the praise of king, marsiya, wailing at the battle of Karbala, this was religious poetry. So all the three forms, ghazal, qasida and marsiya, became very prominent in 18th century Delhi. But all this literature, on the one hand, it was a complete replication of Persian, but on the other hand, it was expressed in a language, in a style that was in circulation in North India and in Midland. By Midland, I mean
parts of present-day Haryana, UP, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh. So this new poetry had a kind of a Persian connectivity. Persian was a feeder language. Persian was a very important part of it, but it also had a local rootedness. So one kind of connectivity and one kind of rootedness. Now this particular poetry, it had many names and it was identified by many names. The longest name was Zaban-e-Urdu Muhalla Shahjahanabad, the language, the speech form of the exalted gentry of Shahjahanabad. From there, it shortened to Zaban-e-Urdu, Urdu-e-Mualla, and eventually, by the end of 18th century, it settled for the shortest possible Urdu. It was also called Hindi as a derivative from Hind. So quite often in literature, the word Hindi was used for this Urdu poetry. Urdu was a Turkish word which meant Lashkar, which meant camp. So people associated this as the language of camp. Now, throughout its life, Urdu, from the 18th century till today, it kept oscillating between some form of Persianization and some form of indigenization. These were two elements, and there was a kind of a tension between the two. Sometimes it would get very Persianized, then it would travel to the other extreme as a reaction and become very indigenous. So there would be indigenization, again Persianization. So there is constant traveling to and fro between Persianization, excessive Persianization, and indigenization. But neither form is completely given up. Both of them remain important parts of this new language. Now I will call it Urdu. Now at some point, particularly in the 18th century and 19th century was its peak, Urdu became the most, ghazal became the most dominant expression of this poetry. I will call it the mainstream Urdu now. Mainstream Urdu was almost exclusively occupied with ghazal, with this particular special form. So much so that the two words Urdu and ghazal have now become synonymous with each other in popular imagination. People treat all Urdu as mainly ghazal, and people treat ghazal as belonging mainly to Urdu. The fact that ghazal can be written in other languages also, or the fact that Urdu may be writing other things other than ghazal, it is not an idea very easily digested. Ghazal has become the main template for Urdu poetry. Now, ghazal is again a very, very unusual, very atypical type of poetry. An Arabic word, and ghazal means conversation, preferably conversations with the lover. So it stands for romantic poetry. It consists of a number of couplets, sher, two-liners. Couplets, and each couplet, each two-liner should be complete with all its meanings, its punchline, its complex, everything, all that has to be said. The entire independent meaning must be encapsulated, must be completed in those two lines, in that sher, in that couplet. The meaning should not spill over to the next couplet. The next couplet in the ghazal will carry its own independent meaning. So ghazal is a repository of independent meaning carrying couplets. Each couplet is a separate universe in itself. Ghazal is merely the repository of these independent meaning carrying couplets. There is one famous European observed this, and he called ghazal an oriental pearls unstrung together. They are together, but they are unstrung because they are not related to each other. They don't tell the same story. They say very, very different things. So ghazal is connected only through form, line, scale, rhyming structure, but in meanings, it is completely disconnected. Each sher is different from the other. There can be many examples of this, but since my time is short, I will not take the examples. Now, this peculiarity that everything has to be packed in just two lines, this had some very interesting implications. First implication was that large stories, big narratives cannot really be told. How do you tell a large story? How do you tell a big love story? How do you tell a big patriotic story about heroism, about glory? How do you tell it only in two lines when the story has to begin from the first line and end by the second line?
The first line and the second line should be complete. So you cannot tell big stories. You cannot tell big narratives through the medium of ghazal. It is a very restricted, very finite kind of a medium. This form is completely unfit, very completely unsuitable for a certain type of narrative, for a storytelling. You cannot do it. Ghazal also had to be repetitive. It was of the very essence, it was of the very DNA of ghazal to be repetitive. Same thing would be repeated time and time again. It would be said in different ways, but broadly the same idea would be carried. The parameters had been fixed. For any new Urdu poet, the challenge was always not to say something new, but to repeat the old, but to repeat, to give it a new spin, give it a new twist, say something in a new way. Don't say nothing new, but say it in such a way that it has not been said before, which will attract attention. Turn the existing meaning upside down. Whatever someone else said, you react to it and change the architecture. It has been said that Ghalib, the famous 19th century poet of this tradition, did to Mir, famous 18th century poet of the same tradition, what Marx had done to Hegel in philosophy. That is, reconfigure the elements within the same frame, rework the architecture of the room from top to bottom, change the chairs and the beds, but basically in a very finite range. The range is finite, within that you rework. So good poetry is all about reworking of the older meanings, of the older arrangements. So we have this most unusual poetry tradition in Urdu, in ghazal particularly, and Urdu was very overwhelmingly about ghazal. Now this unusual tradition is internally connected in time. So the 18th century ghazal writers, 19th century ghazal writers, they write about each other and they write about things as if they all belong to the same time. It's not progressing in time. It is almost static in time, and all times are internally connected. People refer to each other across time as if they all belong to the same times. This poetry was also morally and socially completely neutral. It was not meant to inspire you. It was not meant to push you towards higher conduct, towards higher ideals. High ideals will not talked about. Good poetry was judged on an aesthetic scale, not on a social or an ideological scale. Good poetry was not something which inspired you towards doing great things. Good poetry which was high on an aesthetic scale, which was aesthetically pleasing, which it gave you joy. This tradition was self-referential. It constantly referred to itself, not to the world outside, but it referred to itself. It generated its own universe. It did not have any real characters of flesh and blood, but it rather had cardboard characters. So a large number of characters come in Urdu poetry, in mainstream Urdu poetry, but they're all cardboard characters. Rind, Saqi, Pir Mugha, Qasid, Namabar, Ashik, Mashuk, Raqib. They all keep reappearing with fixed motives and ideas. There is just no time to attribute new motives. Where will you do it? You just have 2 lines in which to do it. So they have the same motives. The readers are supposed to know it. And then something new is generated out of this old. This poetry was not, I would not call it secular, but it was very heretical. It was very damning of religion. It was in some ways secular also, but secular has a different meaning. It was very heretical. It was very allergic to any form of moralizing, any form of preaching, any form of religious moralizing. The religious characters are actually the villains. They are ridiculed, they are laughed about. So the religious people like Sheikh, like Zahid, like Nase, like Wise, the preacher, the priest of rituals, the religious leader, the moralist, the self-righteous one, the Zahid, all these people are made fun of. They are ridiculed. All the rituals, all the religious rituals are made fun of. The mainstream Urdu poetry is replete with such ghazals, and I really do not have the time to go into it, but maybe some other time. So that's mainstream Urdu for you. That's ghazal for you. Not all of Urdu, but the mainstream Urdu poetry. It was very unusual,
very atypical. It was a very enchanting world for its followers. Those who followed Urdu, they loved it. They died for it. They would constantly reproduce the sher and the shairi. But otherwise, it was a very, internally, it was a very disenchanted world. It was not an enchant. So it's an enchanting world for its followers, but internally a very disenchanted world. It's very insular in time. It's very insular in space. It's very insular in theme. It's socially and morally neutral. It's heretical. It does not inspire larger than the self kind of ideas and ideals. It's not something that could possibly be taught in textbooks to school children. There is nothing in it which could inspire people. It's a kind of a circle which was closed and complete. It moved in that same circle and people kept doing better than the other, but they did better within the same circle. The circle was well defined, finite circle, and with the circle was closed, it was complete, and within the circle, people wrote their poetry. Now, the big question then is, how was it that patriotism and nationalism make their entry into such a poetry, such a tradition, such a world? How did they encroach? Or how did they make an entry into this world? How did they break the closed circle? Within that circle, any kind of patriotic and nationalist poetry was not possible. Prima facie, it seems very unlikely that such a tradition can actually produce patriotic and nationalist poetry. But it did. It did produce plenty of patriotic and nationalist poetry. And now I will demonstrate how it happened and what kind of poetry it produced. Now, here is my answer to the riddle, and then I will describe the nature of patriotic and nationalist poetry. Modernity, largely modernity, but beginning of print, beginning of a proto-public sphere, it altered and reconfigured the world of Urdu, as it did the world of other literary languages, Hindi or Gujarati, etc. But Urdu particularly, it did dreadful things to Urdu, dreadful from the vantage point of those who were living in this world. There was a set of secure, insular, exclusive, patronage-based world of Urdu, and that world was completely shaken apart, completely torn apart by the arrival of modernity, arrival of print, arrival of a public sphere, arrival of prose, etc. So basically Urdu had to undergo multiple transitions, primarily in the second half of the 19th century. There were many transitions which were triggered. We can also call them mutations. So this earlier tradition mutated into multiple forms. What were the transitions that Urdu had to make? Well, a small exclusive world of mushaira, the small assembly, the seminar in which poets write their poetry and they are appreciated. This had to open out into the larger world of print. Print meant that the audience became much larger. It was no longer confined to the elite. The other transition was from poetry to prose. The larger world was more interested in prose, in journalism. So Urdu had to break out into prose also. From form to content, the mainstream Urdu that I talked about, it was obsessed with form, much less obsessed with content. Content was secondary, subordinate to form. Now, content became more important. And also a very ornate, heavy, Persianized style had to give way to a more direct, explicit, and a simple style. So the prose that was written in Urdu had to be direct, explicit, and simple. Ornate, Persianized style will not do. Above all, the new poets who came in the second half of the 19th century, they were no longer dependent on a patronage system. So the feudal tag will not really work. These new people had to work and fend for themselves. Iqbal, the famous 20th century poet, he was a lawyer and a professor. Akbar Allahabadi was a session judge.
Hali Panipati, these are some of the people I'll be talking about. Altaf Hussain Hali, he worked in a bookstore. He had to earn for himself. This was very different from the earlier generation of Urdu poets, from Mir to Ghalib to Sauda. They were dependent on a patronage system. They did not work. Now, in my story today of the patriotic poetry, Hali Panipati, Altaf Hussain Hali, is perhaps the most important character. He is most different from all the other poets. From 1874 onwards, he started doing very unusual things to Urdu poetry, things that would be considered unusual by the Urdu people. He wrote a long poem called Munajat-e-Bewa, which means prayers of a widow. Now, this is a very humanist kind of a poem on the bad life which is there of an old widow. Everybody has left her and she's praying to God. He also organized mushaira on specific themes. He organized a mushaira on a theme called Barkharut, rainy season. Now, many traditional poets really scoffed at it. They were not familiar with this. Why should a mushaira be around a single theme? And why should it be about rainy season? That's not what Urdu was all about. This was all found to be completely unusual. These things had not happened to Urdu poetry before. But much more than that, he wrote a very long poem, and now I'm coming to my theme directly. It was called Hubbe-Watan. Hub is an Arabic word, which is the root word for Habib, Mehboob, Mohabbat, so love. Hubbe-Watan is love for the country, love for the homeland. Now, the interesting thing about this very long poem is that it's not exactly a patriotic poetry. It's not a poetry about love for the motherland. It's a sociological poetry. It's actually a commentary on how important love for the motherland is. The poem does not express love for the motherland. It does not convey his own love for the motherland. But he stands outside and he says love for the motherland is very important. Love for the roots is very important. Hubbe-Watan is very important. So it's a kind of sociology of patriotism, sociology of nationalism. In his poetry, he talks about Ram. He says only when Ram went to jungle that he started missing his Ayodhya. He did not miss Ayodhya while he was there. He took his Ayodhya for granted. But when he was uprooted from Ayodhya, when he went to the jungle, then he developed a great craving for Ayodhya, because that was his Hubbe-Watan. And in this way, Hali Panipati gives you multiple examples of how love for one's own land, one's own country, one's own community, one's own society, one's own country is very, very important. So this is an extremely important sociology of patriotism. It's not a patriotic poetry, but it's a commentary on patriotism. And I think this is very significant. This was how Urdu made a big opening. It broke out into the new kind of patriotic poetry. Through his efforts, I would like to believe that through his efforts, Hali opened up this circle, closed circle of Urdu, closed and complete circle of Urdu into two directions. One was a homeland territorial patriotism, Hubbe-Watani, love for one's own Watan. Now your Watan can be India, your Watan can be your town, your Watan can be your province or whatever. But Watan, Hubbe-Watani, the Watan was not used for the country, nation, but it could be used. Later on, it came to be used for nation. But the second opening that Hali made was a kind of religious patriotism. And not just religious, but Islamic patriotism. Hubbe-Watani and Hubbe-Islam, love for Islam, love for one's own religion. He wrote a very long poem, very long book. It was obviously not ghazal. He broke away from it because he had to tell a long story. It was called Maddo Jazre Islam, Maddo Jazre Islam, the ebb and flow of Islam. It was a story of Islam and of the Muslims and how Islam, once a glorious religion, then it fell into decline and why the decline came about and so on. It was famously, popularly known as Musaddas. It was called Musaddas because it was written in 6 lines, which in Urdu is called Musaddas. Now, there are these two different imaginations that he created for patriotism, a territorial patriotism and a religious patriotism. Religious patriotism took the form of Shibli and Iqbal. They wrote very evocative, very moving poetry on the loss of Islam, on the decline of Islam.
Shibli wrote a very nice 5-line. This was against the Europe. This was against what he perceived to be the destruction of Islam and Islamic institutions and Islamic power at the hands of Europe, particularly the fate of Ottoman Empire. So Shibli wrote, and please notice the words, I don't have to translate it, it's quite simple. Marrakesh ja chuka, Marrakesh is Morocco. Marrakesh ja chuka, Faras gaya, Faras is Persia. Marrakesh ja chuka, Faras gaya, ab dekhna ye hai ki ji pata hai Turki ka marize neem ja kab tak, the half-dead patient of Turkey, Ottoman Empire. Marrakesh ja chuka, Faras gaya, ab dekhna ye hai ki ji pata hai Turki ka marize neem ja kab tak, कोई समझाए ए तहजीब इंसानी के उस्तादों, तहजीब इंसानी के उस्तादों, he is referring to the West, to Europeans, to the imperial powers. ये हशरंग, ये जंग आरा यहाँ तक है, ये हशरंगेज यहाँ कब तक? Why so much of violence? Why this warfare? कहाँ तक लोग हमसे इंतकाम फतेह अयूबी? He is referring to the crusades of the 11th and the 13th century. Fateh Ayyubi. Are you taking the revenge for the crusades from us 8 centuries later? कहाँ तक लोग हमसे इंतकाम फतेह अयूबी दिखाओगे हमें जंगे सलीबी का समा सब? This cross, how long are you, what kind of destruction are you going to heap on us? So there is a wailing, there is a loss, there is a crying, but from a very Islamic, religious kind of a vantage point. There is a lot of Islamic patriotism in it, addressed particularly to the West, to Europeans. A poem which combined a very Islamic, partly Islamic, but mainly territorial patriotism was written by Iqbal, Tarana-e-Hind. The inspiration for Tarana-e-Hind may have been provided by Hali, but there is one line which is very important in Tarana-e-Hind. By Tarana-e-Hind, I mean, Sare jahan se acha Hindustan hamara, hum bulbulein hain, iski ye gulistan hamara. Line which is not known very much. Ayab-e-Raude Ganga, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा. And my sense is that hamara here refers to the Muslims. Now this hum refers to Muslims, this combination of an Islamic patriotism but also a territorial patriotism. Hindi hai hum watan hai Hindustan hamara. This may seem very unusual and anachronistic today, but there was a particular imagination in the 19th century, imagination of India as a kind of an Islamic homeland, India as Al-Hind. Now this imagination of India was dominant, but obviously in the 20th century, it ran into serious trouble in the era of democracy, when obviously nationalism had to be addressed to the majority, more and more people. So there was a kind of a tension which began to be experienced between a religious kind of patriotism and a territorial kind of patriotism. Now, one poet, who's the other important poet in my story, belonging to the same times, late 19th and the early 20th century, he escaped this tension and this dilemma, or rather he resolved this tension and this dilemma with great charm. And this poet is Akbar Allahabadi, 1846 to 1922. Akbar Allahabadi was a remarkable poet. He was a traditionalist, he was a conservative, he was called a conservative, he worked in government service, he was a very religious person. But the fact that he worked in a British government service, that did not prevent him from writing anti-British poetry. And the fact that he was a very religious Islamic person, that did not prevent him from damning and challenging the pan-Islamists. Let me give you some examples. His great commitment to Islam and to religion, and the fact that he was working for the British, his great commitment to religion and Islam did not take him to pan-Islam, as it took Shibli and Iqbal. Iqbal shifted completely to pan-Islamism, global pan-Islamism. That story you know. It took him to Indian nationalism. And I'm using the word Indian nationalism, not just patriotism, for the first time. Because Akbar Allahabadi wrote poetry which included all the elements that constituted Indian nationalism, all the concepts, all the ingredients of Indian nationalism. His poetry was very anti-British. He was very anti-imperialist. I will give you some examples of that. His poetry focused on syncretism, national unity,
particularly between Hindus and Muslims, because Muslims were a large majority of 25%. So it was believed that a solid Indian nationalism can only be built on a kind of Hindu-Muslim unity. And Hindu-Muslim unity was considered the linchpin of national unity. Mind you, he was not secular. Again, I'm not using the word secular for him. There was nothing secular about his poetry. He was very critical of Christianity, sometimes almost anti-Christian. But Hindu-Muslim unity, that project, was dear and was very special to him. He was also anti-West, anti-Europe, against European domination. European domination was, again, opposition to European domination was a very important feature. I'm aware that I'm running out of time. I'll just finish in 10 minutes. Indian nationalism was opposed to European domination, but he was no supporter of pan-Islamism. Unlike Iqbal, he was a complete opponent of pan-Islamism. And above all, he was a great admirer of Gandhi. He was 20 years older than Gandhi, but he referred to Gandhi with great respect. He referred to Gandhi as the upholder of the East against the West. His famous line, "Bujhi jati thi shamma mashriqi maghrib ki andhi se." The lamp of the East was about to be extinguished by this great storm that was generating from the West. "Bujhi jati thi shamma mashriqi maghrib ki andhi se." उम्मीद रोशनी कायम है लेकिन भाई गांधी से. So Gandhi was the hope for the East as against the West. So his commitment to Islam did not take him towards pan-Islam, it took him towards Indian nationalism. He ridiculed pan-Islamists. Sheikh ji tumko mubarak Room is Iran and Constantinople. Sheikh ji tumko mubarak Room हम तो कहते हैं कि गांधी जी की जय. और हिंद से आपको हिजरत हो मुबारक हजरत. In 1922, many leaders fighting the Khilafat movement, they decided to do hijrat from India. They considered India to become a land of an Islamic land, and they decided to migrate to Afghanistan. He was opposed to that. So he said, हिंद से आपको हिजरत हो मुबारक हजरत, हम तो गंगा ही पे अब मार के आसन बैठे. He wrote a lot on Ganga. Final line from Akbar. When he's telling the pan-Islamists that during the course of the Khilafat movement, 1920-22, pan-Islamism derived all its vibrance, all its energy from Indian nationalism. And without Indian nationalism, pan-Islamism would start wavering. And his symbols are Aab-e-Zamzam and Ganga. Aab-e-Zamzam se kaha maine mila Ganga se kyun? I told Aab-e-Zamzam, why did you come to meet up with Ganga? आब-ए-ज़मज़म से कहा मैंने मिला गंगा से क्यों तेरी तीनत में इतनी नातवानी आ गई? Why did you become so weak so as to come and meet with Ganga? वो लगा कहने कि हजरत आप देखें तो जरा बंद शीशी में था. आब-ए-ज़मज़म was locked in a small area. बंद शीशी में था, अब मुझ में रवानी आ गई. So the real vibrance, the real energy I have received after I have developed a kind of a connectivity with Indian nationalism. This is the kind of trend, and he wrote a lot on Hindu-Muslim unity, on which making appeals to Hindus and Muslims, on which I will not go into it details, because there is one longish poem which I really want to recite to you. This longish poem by Akbar is very significant, partly for anti-imperialism, anti-British, partly it is a critique of modernity and all its centralizing and homogenizing tendencies. And so important is the critique that it applies also today to the postmodernist critique of modernity. So in some ways his poetry, this particular poetry, can also be considered a very postmodernist poetry, though he was a conservative, he had no pretensions of any of that kind. The long poem, and then I will translate it, and then I will try and wind up. सवारी उनकी है, सवारी है उन्हीं की, राह उनकी और डाक उनकी, उन्हीं की फौज है, उनकी पुलिस है और चाक उनकी, हवा में एयरशिप उनके, समंदर में जहाज उनके, अमल हम में किया करते हैं नामालूम राज उनके, परेस उनकी ज़बां उलूम उनकी, परेस उनकी ज़बां उनकी, लुगात उनके, हमारी जिंदगी के सारे अज्जा पर हैं हाथ उनके, बहुत ऐसे हैं जो तरके ताउन के भी कायल हैं, मगर ऊंचे हैं जो अक्सर तरफ इंग्लिश की माइल हैं,
फकत जिद है जो कहती है कि जब अपनी ज़बां खोलो हमारे पेशवाए हिंद गांधी जी की जय बोलो। कराइन कह रहे हैं आ रहा है दौर फितनों का, चलेंगी वो हवाएं नक्श मिट जाएगा कितनों का। Now this is a long poem and I have translated it into English, loosely translated, it's my own translation. Passengers, road and the post, all theirs. Army, police and the intelligence, all theirs. Aeroplanes and ships on the water, all theirs. So many unknown secrets within us, all theirs. Knowledge, literature, press and language, all theirs. They control all facets of our lives. हमारी जिंदगी के सारे अज्जा पर हैं हाथ उनके. There are many who want to end all this. बहुत ऐसे हैं जो तर्क ताउन के भी कायल हैं. But the high and mighty, ऊंचे हैं जो, but the high and mighty are inclined towards the British. मगर ऊंचे हैं जो अक्सर तरफ इंग्लिश की माइल हैं. It is my sheer obstinacy, फकत जिद है. It is my sheer obstinacy that says that whenever you speak, you must say Gandhi ji ki jai, the leader of India. हमारे पेशवाए हिंद गांधी जी की जय बोलो. Let's now realize a storm is brewing. तराइन कह रहे हैं आ रहा है दौर फितनों का. Such winds will blow that many are going to be blown apart. चलेंगी वो हवाएं नक्श मिट जाएगा कितनों का. This is really a high point of Akbar, but so much of his poetry is replete with instances of this kind. Akbar is so important that I think we need to have a very separate session on him. But apart from this, let me now wind up. There were poets who wrote on specific episodes of the national movement. So there was a poet, Brajnarayan Chakbast, who wrote on specific events, on Tilak, on other leaders, on home rule. His famous poem was तलब फजूल है कांटों की फूल के बदले, नले बहिश्त भी हम home rule के बदले. So he's using all the traditional imagery of Urdu, bahisht, फूल, कांटे, but he's using it for a political purpose. Nale bahisht bhi hum home rule ke badle. Home rule is more precious to us than paradise. In the 30s, with the beginning of the progressive movement in Urdu, but also in other languages, the progressive poetry, which was very well developed in Urdu, it made a sharp critique of nationalism, basically pointed out the limits of nationalism. So it was a critique of nationalism, but it was a critique of the kind which so many people made in the 20th century. Tagore, Gandhi, Nehru, Imchand, all of them pointed out the parochial, narrow side of nationalism. So did the progressives. So its signature poetry is of course by Faz, Subh Azadi, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं. This is not that kind of morning that we dreamt of. And Faz ends his poetry with saying कि बढ़े चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, अभी गरानी शब में कमी नहीं आई, न जाते दीदा वो दिल की घड़ी नहीं आई. That beautiful moment has not come. बढ़े चलो वो मंजिल अभी नहीं आई. A large number of people wrote, progressives, they expressed a lot of disenchantment with nationalism. But this was not being anti-nationalism. They expressed a very nationalist disenchantment with independence, with freedom, with national movement. The fact that independence did not mean anything to the poor people, the crying and wailing of the poor people. So they expressed a disenchantment, but that disenchantment was very completely a part of nationalist Urdu poetry. Okay, then let me sum up now. Urdu was the most unusual and atypical tradition, particularly the mainstream Urdu. It was a kind of circle. Now, in the 19th century, Urdu broke out of its closed circle in the second half of the 19th century. Hali, the first major Urdu modernist, he created two very different openings, one towards a religious patriotism and the other towards territorial patriotism. Akbar Allahabadi elevated it to full-fledged Indian nationalism and all its constituent themes. Chakbast, Brajnarayan Chakbast, focused on specific episodes of the national movement and of nationalism. And the progressives in Urdu, they highlighted the limits of nationalism. So that was also very much a part of nationalism.
the old circle of Urdu, which I described at the beginning, it was by now, it had been transformed into a flowing stream. And when it became a stream, then many other themes, strands, and other strands, they joined and they enriched this stream. Now, this stream also entered popular Bombay cinema after independence and expressed itself in many forms. Many of the top Urdu poets, Sahir, Majru, Sardar Jafri, they entered Bombay cinema and made their contribution. So there was a celebration of homeland and motherland. There was a clear optimism about India's future. Ab koi gulshan na ujde, ab watan azad hai. There was expression of specific episodes, China war with 1962 or war with 1965 war with Pakistan. Many of them wrote on it. Urdu played a very important role in all this, but all that is a separate theme for another time. I must stop now. Thank you very much for all your patience and kindness. Thank you so much, sir. It was really a thought-provoking and very inspiring lecture. We all listen it very carefully. One small request from you, sir. We are planning to publish all these lectures in a form of book. So if you can please provide us the written format of this lecture in a paper form, I will personally connect with you via mobile and via email. Sure. So this is a small request. Sure, I will. Thank you so much, sir. अब मैं आज के समाहार के लिए अपने माननीय कुलपति, माननीय समकुलपति और स्वाधीनता संग्राम तथा प्रवासी अध्ययन केंद्र के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सुशील जी। आदरणीय कुलपति श्री नागेश्वर राव जी, मेरे अजीज विद्वान मित्र प्रोफेसर सलिल मिश्र, जिन्होंने आज का मुख्य वक्तव्य दिया, और मेरे सभी साथियों, क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक, सभी विद्यापीठों के निदेशक और सब लोग हमारे विद्यार्थी जो ज्ञान दर्शन पर और स्वयं प्रभा के चैनल पर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है, उनको मेरी शुभकामनाएं और सबको नमस्कार। आज का ये वक्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य था और मैं जानता हूं कि प्रोफेसर सलिल मिश्र उर्दू साहित्य के एक बहुत ही अच्छे पाठक हैं और वो लगातार उर्दू साहित्य पढ़ते रहते हैं और अध्यापक की एक विशेषता होती है कि जो वो पढ़ता है उसको गुनता है और गुनने के बाद उसमें से कुछ अमृत भी निकालता है। तो हमारा जो ये 43rd सीरीज ऑफ वेबिनार है, 43वां समारोह, उसमें हमने देखा कि उर्दू साहित्य के बारे में बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य दिया प्रोफेसर सलिल मिश्र ने, और उन्होंने बेबाक होकर ये बताया कि किस प्रकार जो उर्दू कविता लिखी गई उसमें राष्ट्रीय प्रेम के साथ साथ इस्लामी भक्तिभाव का भी समावेश हुआ और बाद में फिर इस कविता में भारतीय राष्ट्रवाद का भी समावेश हुआ। ये उनका कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे बहुत ही संजीदगी से और बहुत बारीकी से इस वक्तव्य को समझा जाना चाहिए।
मेरा ये मानना है कि जो साहित्य रचा जाता है वह साहित्य अपने परिवेश से निर्मित होने के कारण वह अपने समय को अभिव्यक्त करता है। प्रोफेसर सलील मिश्र ने यह बात कही कि उर्दू कविता अपने शैली, अपने स्थापत्य और अपने सौंदर्य के लिए जाना जाता है और उसमें सामाजिक, राजनैतिक यथार्थ अपेक्षाकृत उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, अगर मैंने ठीक समझा है तो। मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से देखना चाहूंगा कि चाहे, और मेरे सामने अमीर खुसरो है, जब हम अमीर खुसरो की बात करते हैं तो अमीर खुसरो अपनी कविताओं में हिंदवी की भी बात करते हैं और वो हिंदी और हिंदवी की जब बात करते हैं तो जो उत्तर भारत में जितनी भी बोलियां हैं जो बोली जाती थी उनके लिए वो हिंदवी का प्रयोग करते हैं। और निश्चित रूप से जैसा कि प्रोफेसर सलील मिश्रा ने कहा कि उर्दू कविता में और खास तौर पर ये फारसी और हिंदवी का द्वंद्व लगातार बना रहता है। जब कवि को जनता के पास पहुंचना होता है, चाहे वह राजदरबार के माध्यम से क्यों न पहुंचे, तो वह हिंदवी में कविता लिखता है। लेकिन जब उसे अपनी विद्वता प्रदर्शित करनी होती है और आलंकारिक प्रवेश करना होता है तो वह फारसी में कविता लिखता है। उसी तरह से जैसे हम हिंदी में देखते हैं कि कुछ कवि अलंकृत कविताएं लिखते हैं और बच्चन जैसे कवि, दिनकर जैसे कवि बिल्कुल जनता के पास जाकर उनकी भाषा में कविता रचित करते हैं। हिंदी के दुष्यंत कुमार को कौन नहीं जानता है। उन्होंने भी अपनी गजलों के माध्यम से अपने राजनैतिक मन को सामने रखा, एक राजनैतिक प्रतिपक्ष सामने रखा। तो इसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला का मसला है नहीं। मसला है कि जो अभिव्यक्ति है वह अभिव्यक्ति, साहित्यिक अभिव्यक्ति अपने समय को कैसे पकड़ रहा है। मैंने सलील भाई की पुस्तकों को पढ़ते हुए और उनकी किताब का एक अनुवाद भी मैंने किया है, वो मैंने ये महसूस किया कि ये जो भारत का जो बंटवारा हुआ या हिंदी और उर्दू में जो फाक आई वह जनता के स्तर पर नहीं आई। जनता के स्तर पर तो उर्दू और हिंदी में कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन साहित्य के स्तर पर और जहां जहां एलिट साहित्य लिखा गया उसमें खास तौर पर संस्कृत निष्ठता और फारसी निष्ठता ज्यादा आई। लेकिन वही कविता जीवित रह सकी। इकबाल की वही कविता आज जीवित है, लोगों की जुबान पर है, जो जनता को समझ में आती है और जो जनता की भाषा में लिखा गया। और वही कविताएं आज अमीर खुसरो को, नजीर अकबराबादी को और दूसरे उन तमाम कवियों को जीवित रखे हुए हैं हमारे मन में, क्योंकि उन्होंने आम फहम और बोलचाल की भाषा में कविता लिखी।
और आप सब जानते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी बंधु थे, और चाहे वो आजाद हिंद फौज में भी किस तरह से उर्दू कविताएं लिखी गईं, जिसने राष्ट्रीय भावना को उत्प्रेरित किया। तो राष्ट्रीय भावना को उत्प्रेरित करने वाली कविताएं ज्यादातर 1857 और उसके बाद लिखी गई। इसका कारण सलील भाई ने बताया कि जो सामंती समाज था, वह सामंती समाज में इसका तो कोई अवकाश ही नहीं था, और प्रेम और चमत्कार और दरबार, इन तीनों से मिलकर उर्दू कविता बनी। और उर्दू ही नहीं, उसके समानांतर हिंदी में भी कविता बनी। पूरा का पूरा जो रीति काव्य है, जो लगभग इसी समय में उर्दू में कविताएं लिखी जा रही थी, उसी के समानांतर रीति काल में भी कविताएं लिखी जा रही थी। और उनकी समानता देखिए, समानता ये है, एक मिनट, मैं एक मीटिंग में हूं, 2 मिनट बात करता हूं। उनके बीच की समानता देखिए। प्रोफेसर सलील मिश्रा ने एक बात कही, 2 बातें कही। एक रिलीजियस रिचुअल्स का प्रतिरोध, और दूसरा कि एक रूढ़िवादी नायक और नायिकाओं और प्रतीकों और बिंबों का निर्माण। आप तमाम रीतिकालीन कविताओं में देख लीजिए, हालांकि उसमें राधा और गोविंद की बात की गई है, राधा कृष्ण की बात की गई है, लेकिन सारी नायिकाएं और सारे नायक रूढ़िबद्ध हैं। क्यों भाई? उनको न नायक से मतलब है, न नायिका से मतलब है। उनको तो मतलब है कि एक दोहा हम सुनाएंगे, और राजा बादशाह और राजा अगर चमत्कृत हो गया तो एक मोहर मिलेगी, एक सोने का सिक्का मिलेगा, अशर्फी मिलेगी। तो ये जो जीने का एक आसरा थी कविता, उसके कारण कविता को चमत्कार पूर्ण बनाने में कवियों ने अपनी जी जान लगा दिया, चाहे वो उर्दू के कवि हो, चाहे हिंदी के कवि हो। लेकिन जैसे ही कविता से रोजगार मिलने की संभावनाएं समाप्त हो गई, वैसे ही उनका सामाजिक दायित्व बढ़ा, और उर्दू और हिंदी दोनों में राष्ट्र के गीत गाए गए। केवल राष्ट्र के ही गीत नहीं गाए गए, बल्कि जो सामाजिक यथार्थ है, उस सामाजिक यथार्थ को भी सामने रखा गया। आमतौर पर छायावाद के बारे में यह कहा जाता था कि यह प्रेम की कविता है, रोमांटिसिज्म की प्रतिछाया है। लेकिन जब उन कविताओं को हम पढ़ते हैं तो देखते हैं, नहीं, ये मुक्ति की आकांक्षा। इसी तरह उर्दू कविता 1857 के बाद मुक्ति की आकांक्षा की कविताएं बन गई। इसलिए फर्क भाषा का नहीं है, फर्क यह है कि साहित्य अपने को किस तरह साधता है। यदि उर्दू में प्रेम की ही रचनाएं लिखी जाती होती तो एक भाषा के रूप में, एक साहित्य के रूप में उसे अस्वीकार कर दिया जाता। जब सारा देश गुलामी की जंजीर में बंधा हो और राष्ट्रीय आंदोलन का बिगुल बज चुका हो,
उस समय प्रेम के गीत सुनने का कोई आकांक्षी नहीं था। उसमें मुक्ति, अगर प्रेम की ही बात करनी है तो उसमें मुक्ति की आकांक्षा छिपी होनी चाहिए। भगत सिंह और उनके सभी साथियों ने उर्दू में कविताएं लिखी और उनकी कविताएं कोई प्रेम जनित या शुद्ध रोमांटिक कविताएं नहीं थी, बल्कि देश प्रेम की कविताएं थी, एक मुक्ति की आकांक्षा को लेकर जन्मी कविताएं थी। तो इसलिए बहुत सही कहा प्रोफेसर सलील मिश्र ने कि उर्दू ने और उर्दू भाषा में जो एक परंपरा दिखाई पड़ती है धार्मिक रूढ़ियों के प्रतिकार की, प्रतिरोध की, और प्रेम भी जो है वह भी खुले रूप में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी सामंतवादी विचारधारा का विरोध ही करता है। सामंतवाद स्वच्छंद प्रेम को नहीं स्वीकार कर सकता, इसीलिए उस दौरान की कविताओं में श्रृंगार का भी समावेश। लेकिन ये देखिए ना कि एक स्त्री और एक पुरुष के प्रेम की चर्चा हो रही। इसके पहले तो उस तरह से स्त्री और पुरुष के प्रेम की चर्चा नहीं होती थी, हिंदी कविता में भी और उर्दू कविता में भी। तो ये उर्दू और हिंदी कविता मुख्य रूप से, ठीक है कि उर्दू का नाम एक बाजार या एक लश्कर से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां से निकलकर जब उर्दू कविता प्रेम की बात करती है तो स्वच्छंदता की भी बात करती है। तो उर्दू और हिंदी कविता के जो पूरा का पूरा चरित्र है, वह चरित्र ऐसा ही है जैसे एक घर में जुड़वा भाई पैदा हुए। एक उर्दू में कविता कर रहा है, एक हिंदी में कविता कर रहा है। लिपि अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं ये मानता हूं कि उर्दू कविता, खासतौर पर जो कविता भारत में लिखी गई, वह पूर्णतः भारतीय है। वह कहीं से, फारस से, ईरान से, तुर्की से आयातित कविता नहीं है। वह यहां के जमीन पर लिखी हुई कविता है और यहां की हकीकत का बयान करती है। इसलिए हिंदी जितनी अपनी है, उर्दू भी अपनी। उर्दू और हिंदी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही एक ही अस्तित्व के दो पहलू, और भारतीय राष्ट्र के निर्माण में इन दोनों ही भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान है। दोहा और गजल, चौपाई, तुलना कर लीजिए, शैलियां कितनी मिलती। संपूर्णता की बात मुक्तक कविता जो हिंदी में की गई, वही मुक्तक कविता तो गजल है, जो प्रोफेसर सलील मिश्रा ने अभी बताया। तो अपने सौंदर्य में, अपने स्थापत्य में, अपने शैली में, और मैं समझता हूं कि अपने यथार्थ की अभिव्यक्ति में भी उर्दू और हिंदी एक संग संग चली, और उन्होंने एक ऐसा साहित्यिक संसार निर्मित किया जिसमें दोनों को साथ साथ रखकर समझना जरूरी, तभी हम भारत को समझ सकेंगे। वरना वो अधूरा भारत होगा जिसमें केवल हिंदी साहित्य को हम समझ सकें। इसलिए जब मैं
पाठ्यक्रम निर्मित कर रहा था तो मैंने अमीर खुसरो और नजीर अकबराबादी को भी शामिल किया रीतिकाल में, मध्यकाल। और मैंने कहा कि रीतिकाली काल की कविताओं को समझने के लिए अमीर खुसरो और नजीर अकबराबादी को समझना जरूरी। हम शुरुआत करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से, खड़ी बोली हिंदी। अमीर खुसरो की कविताओं को देखिए, खड़ी बोली में वो तो लिख रहा था। तो ये जो संरचना बनी खड़ी बोली के आधार पर, उसी संरचना के आधार पर आधारित है आज की हिंदी और आज की उर्दू। इसलिए ये जो राष्ट्रवाद है, भारतीय राष्ट्रवाद, वो दोनों ही कविताओं में मुखरित हुआ और दोनों ही कई प्रतिरोधों के बावजूद, दोनों की कविताओं की अभिव्यक्ति से ही भारत को आजाद होने की प्रेरणा मिली। जिन्होंने इस भारतीय राष्ट्रवाद को छोड़ा वो हाशिए पर चले गए, और जो ये भारतीय राष्ट्रवाद के साथ चले वही केंद्र में बने रहे। वही कविता, वही साहित्य केंद्र में बनी रही जो भारतीय राष्ट्रवाद के साथ बनी रही। जो उनसे अलग हुए वो कहां विस्मृत हैं, कोई नहीं जानता उनको। इसलिए बंधुओं, मेरा ये विचार है कि हिंदी और उर्दू दोनों को ही साथ मिलकर पढ़ना चाहिए। और आज प्रोफेसर सलील मिश्रा का जो वक्तव्य हुआ और जिस ढंग से उन्होंने, काफी समय कम था उनके पास, बहुत सारी बातें थी, मैंने देखा कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं समय की पाबंदी के कारण। लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि हम सभी भाषाओं पर, अलग अलग व्यक्तियों पर हम बात करें, ताकि हम ये देखें कि भारत का निर्माण कैसे हुआ है, भारत बना कैसे, और हमारी भारतीयता का मतलब क्या है। भारतीयता का मतलब इस भूमि से प्रेम करना, राष्ट्रीय प्रतीकों से प्रेम करना और इस देश को अपना समझना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सलील जी को इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। और मेरा यह मानना है कि हम एक कदम आगे बढ़े हैं और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम सर। आप दोनों ने आज बहुत सारे लोगों की आंखें खोली हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों वक्तव्य हमने सुने आज। भाषा का प्रश्न संस्कृति का भी प्रश्न है, इतिहास का भी प्रश्न है, आशा आकांक्षा और अस्मिता का भी प्रश्न है। वह किसी लिंग्विस्टिक सर्वे का प्रश्न नहीं है जो आज हमने आप दोनों से समझा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, अभिजात्य प्रियता और जैन प्रियता के बीच के जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे, भाषा और उसके बाद साहित्य में यह कॉन्ट्रडिक्शंस जिस रूप में आए और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रवाद को निर्मित किया, इस पर भी आप सबने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर सलील मिश्र जी ने एक शायर का जिक्र किया, ब्रजनारायण चकबस्त। मैं उनकी 4 लाइनें पढ़ने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण कवि, जनप्रिय कवि रहे, जनप्रिय शायर रहे, और ये 4 लाइनें प्रतिरोध के स्वरों के रूप में आज भी उपयोग की जाती हैं। उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। चमकता है शहीदों का लहू पर्दे में कुदरत के, शफक का हुस्न क्या है शोखिए रंगे हिना क्या है। तो ये चकबस्त जी की लाइनें हमारे क्रांतिकारियों ने भी उपयोग की और आज भी लोग अलग अलग तरह से उपयोग करते रहते हैं। यह साहित्य की विशेषता है और
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रोफेसर सलील मिश्र जी का कि आज वो हमारे बीच आए और ये बातें हमारे सामने रखी। अब मैं आज के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री सुरेश गोहे जी को निमंत्रित करता हूं। सभी को नमस्कार। भारत की आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इग्नू द्वारा 75 व्याख्यानों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें 43वीं कड़ी के आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर सलील मिश्रा जी, आप हमारे छोटे अनुरोध पर हमारे मध्य आकर के और आपने उर्दू कविता और भारतीय राष्ट्रवाद विषय पर अपनी बात रखी, हमारा ज्ञानवर्धन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। महोदय, आपने बताया उर्दू के जन्म से लेकर किस तरह वह भाषा प्रेम संवाद गजल के रूप में आई और बाद में ही जब उस तरह की कविताओं की रचना की गई जिसके माध्यम से जन जन तक हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी बात को पहुंचाया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक आती है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ये बातें आपने सभी तरह की बताई। वाकई जब देश काल और वहां के जनमानस जिस भाषा में अपने भाव को अभिव्यक्त करता है और अधिकतम तक के संचार करता है वही भाषा होती है, क्योंकि भाषा केवल भाव संप्रेषण का माध्यम होती है। आपने उर्दू के बारे में बताया, आपने बात रखी और राष्ट्रवाद ने किस तरह से उर्दू के माध्यम से राष्ट्रवाद किस तरह से जागृत हुआ, ऐसे आपने सभी पक्षों से विचार हमारे बीच में साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी प्रेरणा से हम इन व्याख्यानों की श्रृंखला को लगातार संचालित कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्वतंत्रता संग्राम और प्रवासी अध्ययन केंद्र के माननीय निदेशक और विश्वविद्यालय के माननीय समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी, आपके निर्देशन में यह व्याख्यान श्रृंखला चल रही है। आप ऐसे विषय विशेषज्ञों को हमारे मध्य आमंत्रित करते हैं और हमारा ज्ञान वर्धन करते हैं। आज आपने समाहार में भी जो बात कही वो बड़े ही दिल को छूने वाली बात है कि राष्ट्रवाद के बिना, राष्ट्रीय भावना के बिना, इस राष्ट्र को प्रेम करने के बिना हमारे पास और कुछ भी सोचने के लिए नहीं है। आपने समाहार के माध्यम से बहुत सारे विषयों को आपने छुआ, उनका सही अर्थ से हमें परिचित भी कराया। आपने संस्कृत की भी बात की, आपने अंग्रेजी की भी बात की, आपने हिंदी की भी बात की, आपने उर्दू की भी बात की। आपने सभी भाषाओं के बीच में भाव किस तरह से चलता है और जन जन के मन में, जन जन के भावना में जाकर के हृदयंगम करता है, आपने हमको बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस विश्वविद्यालय के माननीय समकुलपतिगण प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी, प्रोफेसर आरपी दास जी, प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका सतत मार्गदर्शन, प्रेरणा, सहयोग हमें मिलता रहता। इस विश्वविद्यालय के सभी इकाइयों के, सभी विभागों के निदेशकगण, सभी स्कूलों के निदेशकगण, सभी क्षेत्रीय केंद्रों के निदेशकगण और समस्त अकादमिक जगत और यहाँ के सभी पदाधिकारीगण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, हमारे कुल सचिव, उपकुल सचिव, सहायक कुल सचिवगण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम के संचालन में हमें जिनका भी सहयोग मिलता है उनका सबका धन्यवाद, सबका आभार। विश्वविद्यालय का यह कार्यक्रम ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, ऐसे सभी प्रकार के ऑनलाइन माध्यम से संचार माध्यमों का
जहां से यह जिसके माध्यम से यह प्रसारित होता है, उनका सबका धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के संचालन में तकनीकी टीम का सहयोग हमारे संजय शाह जी और उनके सहयोगी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के संचालन करने वाले डॉक्टर सुशील तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से, आभासी माध्यम से आज जो भी श्रोता वृंद यहाँ उपस्थित है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगामी समय में यूट्यूब, फेसबुक और ऐसे सभी चैनलों के माध्यम से जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुनेंगे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद सुरेश जी। आज का कार्यक्रम बहुत ही आनंदित करने वाला और बहुत अच्छा रहा। हम हमेशा अपने कार्यक्रम का अंत जो है राष्ट्रगान से करते हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हों, और संजय जी से अनुरोध है कि वह राष्ट्रगान का संचालन करें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे गावे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और अब मैं अंत में आशीर्वचन के रूप में सत्यकाम सर जो कहते हैं, हम सबके उत्साहवर्धन के लिए होता है, उसके लिए उनको आमंत्रित करता हूं और ये अनुरोध भी करता हूं कि आज के कार्यक्रम के औपचारिक घोषणा करें, समाप्ति की। सर म्यूट हैं। आज हम लोगों ने बहुत अच्छा वक्तव्य सुना, और अच्छा होता यदि प्रोफेसर सलील मिश्र, मुझे मालूम है कि उन्हें बहुत सारी कविताएं उर्दू की याद हैं, वो कुछ सुनाते तो और अच्छा होता, शाम और रंगीन होती। चलिए फिर और कभी हम मिलेंगे अगले सप्ताह और नए विषय के साथ। और बस इतना ही अंत में कहूंगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। मेरी ख्वाहिश है कि हम 75वें पायदान पर पहुंच जाएं, और जब प्रोफेसर सलील मिश्र जैसे विद्वत जनों का हमारा साथ है तो निश्चित रूप से दम नहीं निकलेगा, अरमान भी नहीं निकलेंगे, हम पहुंचेंगे जरूर अपनी मंजिल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया प्रोफेसर सलील मिश्र।